हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू रैंक नलिटी थ्योरम, और उसमें हमने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का यूज़ किया था। बट एक्चुअल में प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कैसे आता है वो सारी डिटेल हमने डिस्कस नहीं की थी। इस क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट द क्लास। अभी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो है वो इज़ नथिंग बट ऑपरेशन, ठीक है। दैट मीन्स कि गिवन योर वेक्टर एंड गिवन सम सब स्पेस। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि दिस सब स्पेस इज स्पान बाय दिस के वेक्टर A1 to AK। सो गिवन द वेक्टर, गिवन द सब स्पेस, this operation will do what? It will just project the given vector into that subspace and it will give you some output as a vector only, right? हमने देखा था कि every matrix, basically every matrix is seen as some sort of linear operator, right? So let's say this T is some linear operator which is working from Rn to Rn। let's say मेरी d डायमेंशनल सबस्पेस है, सॉरी मेरी एंटायर वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल है। सो देर विल बी सम इफ t इज लीनियर, राइट? सो फॉर ऑल सच दिस लीनियर फंक्शन, then there must exist some matrix let's say A. So this matrix is doing the same thing which the transformation is doing. That means A times X अगर मैं करूँ तो अल्टीमेटली जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो बेसिकली सेम एज अ T ऑफ X मिलेगा। सो ये दोनों इक्विवेलेंट ऑपरेटर है। उस तरीके से हम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक ही का डायमेंशन क्या होगा? n क्रॉस n, बिकॉज उसका इनपुट n डायमेंशनल वेक्टर है, आउटपुट भी n डायमेंशनल वेक्टर है। तो ये हमने देखा था कि इफ t इज लीनियर देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरा ऑपरेशन है प्रोजेक्शन। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज लीनियर और नॉट। सो प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज अ लीनियर। दैट मीन्स कि आप कोई भी दो वेक्टर लो, उसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन करो और फिर प्रोजेक्ट करो कोई सबस्पेस पे, और या तो फिर दो वेक्टर जो है उसका पहले सबस्पेस पे प्रोजेक्ट करो और वो प्रोजेक्शन पे लीनियर ऑपरेशन लगाओ। दोनों ही चीज़ सेम है, राइट? विजुअली भी आप इसे बहुत इंट्यूटिवली समझ सकते हो। हम आगे जाके विजुअलाइजेशन में भी देखेंगे। बट प्रोजेक्शन इज अ लीनियर ऑपरेटर, सो दैट इज वाई देयर मस्ट एग्जिस्ट सम मैट्रिक्स फॉर दिस स्पेसिफिक ऑपरेटर, राइट? सो हमारा पूरा इंटेंशन है कि इस मैट्रिक्स को निकालना है, कैसा दिखेगा। सो लेट अस से ये जो भी सबस्पेस आपको दी गई है A1 to AK, the subspace spanned by this particular vector A1 to AK, उसे मैं एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, उसे एक मैट्रिक्स A के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, लेट्स से, राइट? उसमें सारी रोज आर A1, राइट? सो दिस इज द एंटायर रो। फर्स्ट रो इज A1, सेकंड रो इज A2, लाइकवाइज। लास्ट रो इज AK। अभी ये जो मैट्रिक्स आपको है मिला है उसमें कितनी रोज है? K एंड n कॉलम्स है। और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप अज्यूम कर लो कि ये जो K वेक्टर्स है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑल्सो, राइट? सो A1 to AK इज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ सबस्पेस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, जिस पे आपको एक्चुअली कोई भी वेक्टर को प्रोजेक्ट करना है, राइट? सो A1, A2 till AK is basis for subspace
और ये सबस्पेस एस को मैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए के रिलेशन में लिखूँ तो कैसा दिखेगा? इट विल बी रो स्पेस ऑफ ए, राइट? बिकॉज आई हैव पुट every ai as a row of this matrix A, right? So this is same as a row space of the matrix that I am considering A. और ये जो पूरा प्रोजेक्शन ऑपरेशन है, राइट, प्रोजेक्शन ऑपरेशन और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को मैं P से डिनोट करता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को. सो P ऑफ X बेसिकली क्या कर रहा है, और प्रोज ऑफ X पहले लिखता हूँ. लेट्स से प्रोजेक्शन ऑफ X, व्हाट इट इज डूइंग, it is projecting every vector in X. ये vector X not necessarily in the subspace S में होगा, anywhere, right? So for every vector X in R to the power n, ये particular operation क्या करता है, it will find some vector in the subspace of S, right? Because ultimately project करोगे तो वो vector होगा that will be in the subspace only, right? So this is actually giving me a vector in S. ये जो सबस्पेस S है उसकी बात कर रहा हूँ. फर्दर सिंस A1 to AK इज A1 to AK मेरे बेसिस वेक्टर है फॉर द सबस्पेस S. देयर एग्जिस्ट सम लीनियर कॉम्बिनेशन, और मोर स्पेसिफिकली हमने देखा था कि फॉर एवरी वेक्टर इन द सबस्पेस S I have a unique linear combination for the basis vector, right? So for this vector there exist unique linear combination of AI which gives me this vector, right, which gives me proj of X. ठीक है. सो अभी लेट से विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप अज्यूम करो कि α1 टाइम्स A1 plus α2 times A2, right, up till there exists some alpha k times AK, and it is giving me this specific projection operation, right? उसका जो रिजल्ट होगा प्रोजेक्शन ऑफ X, राइट. सो मैं इसे एक तरीके से फंक्शन की तरह देख सकता हूँ, राइट. अल्टीमेटली द एंटायर थिंग नाउ रिजल्टेड इनटू फाइंडिंग दिस अल्फास, दिस यूनिक अल्फास, सच दैट फॉर ऑल X मुझे ये अल्फा के करस्पॉन्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन है आर सच दैट इट इज गिविंग मी प्रोजेक्शन ऑफ X, राइट. सो अल्टीमेटली सो एट द एंड पूरा ऑपरेशन बॉइल डाउन होता है टू फाइंड दिस अल्फा आइज, राइट, फॉर ऑल X सच दैट मुझे वो प्रॉपर ऑपरेशन मिले. बट अल्फा इज नॉट समथिंग यू नो. That means I mean there is no direct and obvious way to know the alpha I, but what you can know is you can know this dot product X dot producted with AI. This is something that you know, right? So let me define one more function which will give you, given these dot products, which will give me alpha I's, right? Hopefully you understood entire purpose of it. Given this dot product, so this function f is doing what? I'll give you some dot products, right? Dot product of vector X dot product with AI, dot product of vector X dot, sorry, let's say first one is A1, second one is A2, right?
So this dot product is something I can easily calculate. So that is why I am writing it in this form. Right. So what does this function do? Given this dot product, it will give me corresponding alphas. Right. So it will give me another vector of let's say मैं उसे वेक्टर की तरह ही रिप्रेजेंट करता हूँ alpha 1, alpha 2 up till alpha k, and these alphas are of a specific property. Why? Because these alphas are in such a way that whatever the vectors I am considering, let me say that this vector is alpha. और ये alphas की property क्या है? If I do this specific operation alpha times A is what? A are the rows of matrix A, or as per our definition, AI is the ith row of the matrix A, right? So alpha times A will give me a projection of the matrix, or projection of the vector X, right, in the column form. So अगर आप projection of X को आप row form में alpha times A will give me a row vector that will be a row version of projection of X, right? So अगर आप projection of X को if you are defining as a column vector, then you should consider the transpose here. So ये condition satisfy होनी चाहिए, right? So I am interested in finding this F. ये F को मुझे find करना है. So now please know, we have seen that dot product is a linear operation, right? This is something that we have already seen. Dot product is a very specific operation which is a linear operation. So we have already seen the dot product as some form of operation which is satisfying the linearity, right? So dot product of two, like if I add a two vector and I do the dot product with third vector, right, it is same as a taking dot product with first vector with the third vector and taking dot product with second with third and adding it, right? So dot product is a specific operation. More specifically मैं ऐसा बोलूँ कि x प्लस y मैं कंसिडर करूँ और ai कंसिडर करूँ, राइट? सो इट इज सेम एज मैं फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट लूँ ai से, देन सेकंड डॉट प्रोडक्ट लूँ y को ai से. सो लाइक सिमिलरली मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ, बीटा से मल्टीप्लाई करके भी कह सकता हूँ. बट द इम्पोर्टेंट थिंग टू नो इज डॉट प्रोडक्ट is a consistent operation under a linear operation of its input, right? So this is the property that we have seen. With respect to linear operations of its input. Now, why I am saying it is, if you do a dot product of any two vector, right? If I do a dot product with, let's say, x plus y, and I will have some specific values, which is y dot a1, y dot a2, y dot a3, right? And it will give me a corresponding specific vectors which are related to ai dot product with y, right? So let me call them alpha prime. So since dot product are consistent, further ये जो पूरा end to end ऑपरेशन है वो भी लीनियर है, you know, they are specifying satisfying a linearity property. Then this f operation must also satisfy the linearity of property, right? So this is my exact argument that f must satisfy a linearity property, or it must be linear operation.
right? Because proj of alpha times x plus beta times y is same as alpha times projection of x plus beta times projection of y. This must be satisfied. Now you just expand this proj x term with respect to the definition of f, right? So you will see that RHS will be some linear combinations of the vectors, and LHS also will be the linear combinations of the vectors, right? So let me not use alpha exactly, because here also I have used alphas. So let me just use alpha prime, beta prime. There are some scalars. You can just easily distinguish. So as per the definition of projection, right? As per the definition of projection, what I have is proj of alpha prime x plus beta prime y. ये प्रोजेक्शन की डेफिनेशन ही मैं लगा रहा हूँ. इट विल बी सेम एज अ, और इसका मैं ट्रांसपोज करूँ, इट विल बी सेम एज अ सम अल्फास, राइट? सम अल्फास जो मैं कैसे ले रहा हूँ, जो मैं एक्चुअली एफ फंक्शन थ्रू उसको इनपुट ले रहा हूँ, राइट? सो इट विल बी द ट्रांसपोज इज सेम एज अ सम अल्फास, right? These alphas are still unknown, yet to be found, or we will find it through f, calculated through this function f. Alpha times a. Now अगर मैं f से कैलकुलेट करने जाऊं तो कैसा दिखेगा एज पर दिस स्पेसिफिक ऑपरेशन? सारी जगह पे अल्फा प्राइम x प्लस बीटा प्राइम y रिप्लेस कर दो, राइट? अगर आप रिप्लेस करोगे तो यू विल सी दैट दिस एंटायर फंक्शन विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट? Summation of I equal to 1 to k alpha prime x plus beta prime y dot product with a, right? अभी बिकॉज मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट इज ऑपरेशन विच इज कंसिस्टेंट अंडर लीनियर ऑपरेशन ऑफ इट्स इनपुट्स, सो आई कैन राइट दिस एज अ एफ ऑफ alpha prime sum over I equal to 1 to k x dot product with ai, right, plus beta prime sum over I equal to 1 to k x dot product with y dot product with ai, right? ओके अभी भी मैं कह नहीं सकता कि f हैज टू बी लीनियर. वाई इट हैज टू बी लीनियर विल कम इन हियर, दैट सिंस द LHS हैज टू बी डिकम्पोज्ड इन दिस फॉर्म, LHS हैज टू बी डिकम्पोज्ड इन दिस फॉर्म, तो अभी ये जो पूरा प्रोजेक्शन ऑपरेशन है हैज टू बी लीनियर. सो दैट इज वाई मैंने f को इस तरीके से डिकम्पोज किया, राइट? सो यहाँ पे मैंने यूज किया कि दिस एंटायर प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज अ लीनियर, राइट? प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज अ लीनियर, क्योंकि यहाँ पे मैं लीनियर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो ये भी लीनियर ही होना चाहिए, है ना? सो इफ एनी ऑफ द ऑपरेशन इज नॉट लीनियर, द फाइनल ऑपरेशन विल नॉट बी लीनियर, राइट? सो दैट इज वाई यहाँ पे मैंने यूज किया कि प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज अ लीनियर ऑपरेशन.
सो अल्टीमेटली मुझे एक्चुअली में प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोज ऑफ एक्स। तो मैंने आपको बोला था कि यू अज्यूम सर्टेन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स विच इज पी ऑफ एक्स, यू नो, विच इज टेकिंग पी एज विच इज टेकिंग एक्स एज अ इनपुट एंड इट इज प्रोजेक्टिंग इट टू द रो स्पेस ऑफ ए। सो मुझे पी को निकालना है, तो मैंने क्या क्या ऑपरेशन किया। सबसे पहले मैंने बोला कि what you have is this dot product, x dot product with ai's. So you just first compute that. So x dot product ai को compute करने के लिए मुझे क्या चाहिए, a, right? a की सारी रोज x ai है और x मेरा राइट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई होगा तो you know this dot products that I am obtaining here, this dot products that I am obtaining here, right? It will be in every coordinate of the final column vector, right? So ax ये एक ऑपरेशन है। अभी ये आपने डॉट प्रोडक्ट किया, बट स्टिल आई नीड टू फाइंड सम फंक्शन f। ये अभी मैंने एग्जैक्टली कैसे फाइंड करेंगे नहीं बताया, बट स्टिल आई नीड टू फाइंड सम फंक्शन f सच दैट ये जो वेक्टर मिला यू कैन सी इट इन दिस फॉर्म, a1 dot product with x, a2 dot product with x, right? Likewise. So this is the output of this operation only. ये डॉट प्रोडक्ट को मुझे फाइनली ये f से कन्वर्ट करके मुझे f का पूरा मकसद क्या था, f का मुझे करस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएट अल्फा निकालने का मकसद था, राइट? सो डॉट प्रोडक्ट जो आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा निकालना, दैट इज द एंटायर इंटेंशन। सो ये जो मैट्रिक्स जो भी मैं रखूँ यहाँ पे हैज़ टू फॉलो दिस प्रॉपर्टी कि दिस एंटायर डॉट प्रोडक्ट विल गेट कन्वर्टेड इफ आई अप्लाई एफ हियर, then finally in the output I will see some vector which is of this form, alpha 1, alpha 2, likewise, and these alphas are exactly the corresponding linear multipliers that is giving me the projection of I. कैसे आएगा I have still not given you, but it has to perform this operation, and whatever the alpha you have obtained, you just you left multiply A transpose with this, then you will see that A transpose is just the AIs, right? So alpha का linear combination करके मुझे जो final result मिला is just a projection, right? So ये मैंने पहले यहाँ पे ही assume करके चला था। So this projection is nothing but the corresponding alpha का linear combination. So because of this equation, if I just left multiply entire thing with the matrix A transpose, because A transpose की column क्या बन जाएगी, A1, A2, A3, right? So that is why you can see that this is actually giving you this result. अभी F कैसा दिखेगा I don't know, मतलब I have not given you yet. So let us consider this matrix first, let us consider this matrix, what does it does, and then we will relate that matrix to what the f does. So अगर verbally मैं बोलना चाहूँ what is this f doing, f is taking dot product vector as input and giving linear combination multipliers corresponding to projection. ठीक है, तो ये मतलब सिंपल टर्म्स में f ये करता है। अभी लेट मी कंसिडर दिस मैट्रिक्स which is let's say AA transpose. Okay, so what does AA transpose is doing given your input?
सो लेट मी इमेजिन इट इन द रिवर्स वे. रिवर्स वे मतलब कि जो एफ कर रहा है उसका मैं उल्टा, मतलब वट एवर द इनपुट एफ इज गेटिंग and the finally output is corresponding alpha is, just imagine it in reverse way. That means the alpha is our input to this function. So if I do that, alpha is our input, my input, corresponding final alphas, right? Alpha 1, alpha 2 till alpha k. मैं A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा? प्रोजेक्शन मिलेगा, राइट? बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव डिफाइंड इट. सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? प्रोजेक्शन मिलेगा. आई मीन वट एवर योर अल्फा इज, उसके मतलब फॉर एक्स और अल्फा की मैंने पेयर बना ली, उस तरीके से समझो. यहाँ पे जो मैं अल्फा को डिस्कस कर रहा हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स को डिस्कस कर रहा हूँ, दोज आर सेम हियर, राइट? So you can imagine that A transpose X is giving you the actual projection vector, and if I left multiply this projection vector with A, right? With A, if I left multiply it, पहले मैंने A transpose, right? So A से मैंने left multiply किया तो मुझे क्या मिलेगा? Again dot product मिलेगा, right? Why? देखो, मैंने प्रोजेक्शन वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया है, बट मैं कह रहा हूं कि मुझे यहां पे फाइनली करस्पॉन्डिंग एक्स का डॉट प्रोडक्ट मिलेगा. नाउ दिस इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग. व्हाई? आई विल टेल यू. बिकॉज ऑफ दिस सिंपल प्रॉपर्टी दैट जो भी प्रोजेक्शन होगा फॉर एवरी एक्स, राइट, उसके करस्पॉन्डिंग जो डॉट प्रोडक्ट होगा विथ द बेसिस वेक्टर विल बी सेम फॉर प्रोजेक्शन वेक्टर एंड ओरिजिनल वेक्टर बोथ, राइट? सो फॉर ईच आई, this dot product AI dot product with projection of X will be always same AI dot product with X, right? Why? Because this has to be 0 always. X minus projection of X मैं लूँ, right? तो वो perpendicular vector ही मुझे मिलना चाहिए by definition of the projection, right? And this vector has to be perpendicular to all the vectors in my subspace, right? So it need not be perpendicular to only AI, but सारे ही vector in that subspace has to be at 90 degree with this vector. So obviously AI के साथ इसका dot product भी 0 होगा. So आप ऐसा सोचो कि because it has to be 0, right? This is the condition of a very projection matrix, right? So this will actually implying me that above is true. So since above is true, I can simply write that the final output that I am getting is the X transpose, X dot product with it. So this कहने का मतलब है कि given alpha is this A transpose A is giving me the corresponding dot products, right? Given alpha is इसको मैं इनपुट में डालूं तो फाइनली आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? द डॉट प्रोडक्ट corresponding to the basis vector and the original vector, right? So it is giving me this dot product. सो यहाँ पे आपको क्या चाहिए था? जो मैं एफ यहाँ पे मैंने जो मैट्रिक्स एफ रखा था विच वॉज सम वॉट अननोन, राइट? मुझे एग्जैक्टली उल्टा चाहिए था. यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट इनपुट डाला और मुझे फाइनली अल्फास चाहिए थे. तो बिकॉज दैट इज समथिंग सम इनवर्स ऑपरेशन आई वांटेड, राइट? सो फॉर
you can easily prove that for every unique dot products you will have a unique alphas. So this operation is invertible, and that is why this is exactly the reverse operation. F is exactly doing the reverse thing than A transpose is doing. So that is why this F has to be A transpose inverse. Right? So finally, projection of X can be written as A, फिर F क्या था? A ट्रांसपोज इनवर्स. Let me just write it this way थोड़ा. और LHS में क्या आएगा? A ट्रांसपोज. सो दिस इज एक्चुअली द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का फॉर्मूला है. इसे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट? दिस इज P, वॉट P, P, दिस इज P, एंड P is projecting any vector to subspace spanned by rows of A, right? Because A1, A2, AK are the corresponding rows of this A matrix, right? Okay. So this is the formula of projection matrix. If you want to, project a vector into the columns or a subspace spanned by columns of matrix है, तो उसके corresponding आप basically transpose लगा दो. जहाँ पे A transpose है A कर दो, और A है वहाँ पे A transpose कर दो. So you will get a different formula, right? But the process is remaining same. So मैंने आपको बता दिया कि I have given you a specific matrix. How, given a vector, how I can project it into the subspace spanned by the rows of that matrix. Now let us see this entire projection operation visually. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2D सरफेस है. यहाँ पे दो वेक्टर में ले रहा हूँ, A1 और A2 नाम ले रहा हूँ. यहाँ पे एक ब्लू वेक्टर है और एक ऑरेंज वेक्टर है, एंड दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग सम सबस्पेस विच इज प्लेन, राइट? सो ये जो लाइट ब्लू कलर के पूरा प्लेन है, इट्स अ सबस्पेस क्रिएटेड बाय दिस टू वेक्टर्स. नाउ आई वांट टू फर्स्ट शो दैट वॉट एवर द प्रोजेक्शन दैट वी विल डू is consistent under a linear operation of the original inputs, right? So hypothetically, suppose आप ऐसा समझिए कि मैं x1 और x2 वेक्टर ले रहा हूँ, और x1 वेक्टर अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने पर्पल वेक्टर लिया है, राइट? एंड x2 वेक्टर जो है वो बेसिकली मेरा ये वेक्टर है, विच इज़ दिस ब्लू कलर, सॉरी ग्रीन कलर वेक्टर, राइट? सो अभी दोनों का आप प्रोजेक्शन देखने जाओगे तो लेट मी कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ बोथ दिस वेक्टर्स. सो प्रोजेक्शन ऑफ x1 will be the original blue vector, जो one of the bases हमने consider किया था, right? And projection of x2 is actually this green vector, right? तो ये दो projection मुझे मिले, and now suppose if I add both these vectors, which is x1 and x2, and then do the projection, ultimately I'll get this big yellow vector, right? And this is same as first projecting and then adding, right? Now जो भी प्रोजेक्शन दिख रहा है एंड ओरिजिनल वेक्टर कैसा होगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो लेट मी ऐड बोथ दिस वेक्टर्स, राइट? x1 एंड x2, एंड करस्पॉन्डिंगली मुझे एक रेड वेक्टर मिलेगा.
तो मैंने x1 और x2 के ऐड किया तो ये मुझे रेड वेक्टर मिला एंड दिस प्रोजेक्शन इज द येलो वेक्टर। तो आप देख रहे हो कि रेड वेक्टर माइनस येलो वेक्टर इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द येलो वेक्टर। दैट मीन्स की प्रोजेक्शन जो है इज एक्चुअली ऑर्थोगोनल टू द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वेक्टर एंड द प्रोजेक्टेड वेक्टर, राइट। सो ये एक प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, राइट, कि कोई भी प्रोजेक्शन है इट हैज़ टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने दूसरा सिनेरियो लिया है कि लेट्स से अभी ये एक वेक्टर है विच इज़ आउटसाइड ऑफ दिस स्पेसिफिक सब स्पेस, राइट। उसका प्रोजेक्शन निकालना है तो फर्स्ट व्हाट यू डू, यू जस्ट डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस येलो वेक्टर विथ बोथ द basis vector, that is blue and yellow, orange, and there will be some linear combination of both of these vector, right, which will give me the corresponding projection vector which is a green end at this particular point. If A is a row vector then x को मुझे as a column vector लिखना पड़ेगा, so A1 x transpose होगा ideally, please ignore that typo, but this is a dot product, right? This is again a dot product. And there is some linear combination of both A1 and A2 which is giving me this specific projection matrix, right? वो जो linear combination आप देखोगे कि ये है, ये पहले मैंने linear combination ये A2 के corresponding और ये जो orange है वो A1 के corresponding dot product है, right? So here if you see this entire term is what? The component of this entire yellow vector in the direction of A1, right? So that is a orange one, and similarly this is for A2, right? So we'll end this lecture here. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इसमें हमने डिराइव किया एक्चुअली कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का फॉर्मूला कैसे आएगा। सो thank you very much for watching the lecture and see you in the next lecture.